আজকে আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার চলে এসেছি। উই আর ব্যাক अगेन। তো এখন তোমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডিকটেশন প্র্যাকটিস হবে। ডিকটেশন ক্লাসটা শুরু হবে। বেসিক ক্লাসটা তোমরা নিয়ে নিয়েছো আশা করি, বিগিনার্স যারা আছো বেসিক ক্লাসটা হয়ে গেছে। এবারে হবে ডিকটেশন অ্যাট দ্য রেট অফ 100 ওয়ার্ডস পার মিনিট। এটা হচ্ছে যারা এক্সপার্ট লেভেলে পৌঁছে গেছো, বিগিনার্স থেকে অনেকদিন থেকে প্র্যাকটিস করছো, 100-এ প্র্যাকটিস করো, তাদের খুব ভালো লাগবে আশা করি। 100 ওয়ার্ডস পার মিনিটের ডিকটেশনটা নিয়ে জানাও যে ডিকটেশনটা কেমন হচ্ছে, আর ওয়ার্ড কালেকশন কেমন হলো, আর স্যার যে স্ট্রোকগুলো করে দেবে সেই স্ট্রোকগুলো তোমরা আগে দেখে নাও। তাদের আটকাতে পারে ভাবছো বা प्रॉब्लम होते पारे, तो प्रॉब्लम होगा ना कोनो, क्योंकि सर पहले ही ये स्ट्रोक आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये स्ट्रोक पहले आप लोग देख लीजिए। देख लेने के बाद आराम से प्रैक्टिस करके फिर ऑडियो हेडफोन में लगा के आराम से डिक्टेशन लीजिए। 5 मिनट का टाइम होगा, 100 वर्ड का स्पीड होगा, 500 वर्ड्स का टोटल डिक्टेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अभी जो होने वाला है वो बात, कार्यक्रम जो आप बता दिए हम लोग आपको। तो अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, ये जितना वीडियो आप लोग देख रहे हो, जितना भी आपको पसंद आ रहा है, लिख के हम लोग को बताइए। हम लोग बहुत उत्सुक है जानने के लिए। वी आर ईगर टू नो अबाउट योर फीडबैक। ठीक है, তো তোমরা ভালো করে দেখো ভিডিওটা, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম ভালোবাসো, আমাদের চ্যানেলটাকে, স্টেনোগ্রাফিকে ভালোবাসো। সামনে অনেক এক্সাম, তোমরা ভালো করেই জানো। ওকে গাইস, লেটস রক। হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে যে আমি ডিকটেশনটা দেবো 100 ওয়ার্ড পার মিনিট, যেই প্যাসেজটা দেবো সেই প্যাসেজের মধ্যে যে হার্ড স্ট্রোক, শর্টকাট, শর্ট ফর্ম, সেগুলো আজ এখানে আমি डिस्कस করে বুঝিয়ে দেবো। তারপর আমি डिक्टेशन देबो। पहले आज जो डिक्टेशन देंगे 100 वर्ड्स पर मिनट, वो पैसेज के अंदर जितना सारे हार्ड स्ट्रोक है, शॉर्ट फॉर्म जो है हम बता देंगे, उसके बाद हम डिक्टेशन देंगे। टुडे आई विल गिव 100 वर्ड पर मिनट ए डिक्टेशन, एंड इन दिस पैसेज we discuss here about short form and joining. Okay, follow this. Mr. Prime Minister, Mr. Prime Minister, এমার হোক, পিয়ার হোক, STR লুপ, STR লুপ এটা 50 পুরোটাই कवर করবে। हाँ, STR लूप जो है ये कम से कम आधा से ज़्यादा हिस्सा लेगा एम का। प्राइम मिनिस्टर, असिस्टेंट, स्टोकेज, साइक्लिस्ट T, राइट मोशन साइक्लिस्ट बिकॉज NS साइकिल, कैपेबिलिटी K, डिसीजन B, कैपेबिलिटी, रिएक्टर रे K डबल, बॉम्बे BMBTCAN, exploded K cyclist peer loop D half. In the last few years, peaceful purposes, peaceful P big cyclist, peaceful purposes. Resentment D upward such N half, meant for N half. Explosion K cyclist peer loop Sanuk, amongst MNSTO, aval. Manufacture AMN F double. Government of India Gay Division in half. Nuclear weapons in cutting weapons WPLU. Conventional conduct V ensign L conventional. Nuclear arms in cutting arms. Tremendously, TRU MND surplus L. So far as A double surplus. Elimination, down L, MN Sanu, down L, because vowel comes before of L. Destructive, D surplus TRU K TV hook. Rather than R double N hook, US and China. YS region J, tick sign. Colombo KLMBTCAN. Half upward edge F hook. Negotiation UNG Sakesanu. Withdraw
is double. W is double. In fact. Eventually, BNT upper. Eventually. India and China. In half region Chedu. China put a diphthong. Okay. Soviet Union, BTNO, N for Union. Ever since, Belarus circles N token circles. Suggesting. Disputes, D circles P half circles. And so on. And download circles token. Non-violence, NNBL, Edu circles or NNBL token circles. ओके, ये सब हम बता दें, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एमआरओ, पीआरओ, प्राइम मिनिस्टर हो गया, एम प्राइम, एसटीएलओ फॉर मिनिस्टर, असिस्टेंट टोकन सेक्रेटरी, एनएस सर्कुलर, कैपेबिलिटी, के डिवीजन बी, कैपेबिलिटी, रिएक्टर अपर के डबल, बॉम्बे बी एबिथिकल, बॉम्बे. Exploded, case of PLD, clearly showed up a look. In the last few years, LST look, a down. In the last peaceful purposes, peace as a second look, purposes, P big circles. Peaceful करके P big circles. Peaceful करे P. Recent pen, upward circles N half, again N half for men. Explosion, case of PLU Sanuk, amongst MNST manufacture MNF, Government of India, government get division in half, Government of India. Nuclear weapons, cutting weapons, conventional, conduct B Sanukel, short form, B Sanukel, conventional. Nuclear arms, cutting arms. Tremendous TRD surface of water. So far as S double surplus, part for S double. Elimination downhill MN Sanu. Destructive D TRU KTVO rather than L double NU. US and China. US Y surplus, China Che region I diphthong. US China. Colombo K downhill MB thicken. Half upward edge F hook. Negotiation N surplus Sanu. Small hook dissension. Negotiation. Withdraw. W is double. It for DR for double. In fact, N join F up. In fact, eventually BNT upward. India and China. N region, N half region China. Soviet Union, circle BTNU, Soviet Union. Ever since, Belarus circles token circles, suggesting circle J is to looping. Disputes D circles P half circles, and so on. Non-violence NNBL NU circles or NNBL token circles. এইসব শর্ট ফর্মগুলো বলে দিলাম. যত ডিকটেশন আমি দেবো আরও ভালো শর্ট ফর্ম আছে, আর আমি একদিন স্পেশাল ক্লাস করাবো অ্যাবাউট অনলি শর্ট ফর্ম. আরও ভালো শর্ট ফর্ম আমার কাছে আছে, সেটা প্যাসেজের বাইরেও হয়. তো আমি 3-4টে ক্লাস দেবো, পুরো লিস্ট আমি দিয়ে দেবো, शॉर्ट फॉर्मेट लिस्ट. ठीक है, बीच बीच में हम क्लास देंगे एक्स्ट्रा, वो ओनली फॉर शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, आज हम डिक्टेशन आगे बढ़ रहे हैं. 100 वर्ड पर मिनट एक तो स्पीच हम देंगे 100 वर्ड पर मिनट. ओके, फॉलो द डिक्टेशन. थैंक यू. Mr. Prime Minister, with Canada's assistance, India has been developing a nuclear capability in the reactor near Bombay in the last few years for peaceful purposes, of course, but now China has exploded
a nuclear bomb. There is naturally great resentment in our country against the explosion of the Bombay by China, and naturally there is a desire amongst a section of our people that we should also go in for the manufacture of atom bombs. However, keeping in view our basic policies, the government of India have decided not to use their present capability to go in for the manufacture of nuclear weapons or for the manufacture of atom bombs. The danger from China is in no way less of conventional weapons than of nuclear arms. China has developed tremendously its conventional weapons, and we may have, if a situation arises, to face them in their attack if it comes off with the conventional weapons. And so far as nuclear weapons are concerned, India will work for the elimination of nuclear weapons rather than make them for destructive purposes. There has been no talk at all between US and China, but we had, as you might be aware, favorably responded to the Colombo proposals, and it was about a year and a half back when there was a further proposal that China will withdraw their checkposts on the attack front, or India may also have the same number of checkposts on their side. We agreed to either of the suggestions, but to that also there has been no response from China. In fact, they have pooh-poohed this proposal. During the recent discussion with the leaders of the Soviet Union, did you have any indications as to what their attitude would eventually be in the case of an open clash between India and China? I do not know what their attitude would be, but during the last suggestion, the Soviet Union was more or less neutral. India's general policy ever since it became an independent nation has been identified in the mind of the world with non-violence, peaceful coexistence, peaceful negotiation, and so on. We are always for peace, and if we can resolve our differences and disputes in an honorable way, then we would never like to enter into any kind of clash or conflict. It all depends upon what the attitude of China will be. As you would remember, our late Prime Minister had gone to the length and suggesting that we would be willing to refer this matter to a tribunal, and I do not think that he could go any further. We do stand by our earlier position that we would like the aggression to be vacated. I believe the chambers of commerce have a significant role to play. They are not only to ensure the smooth functioning of trade and industry, but
can make a single contribution to the growth of our economy.